You can get, and what is the formula you'll get it then? The limiting force of static friction is equal to mu mg. Okay, mu into n. Mu into mg, where mu stands Yeah. for, what does mu over here stands for? Sorry, sir. What does mu stands for here? It is the coefficient of static friction. Okay, that's the first law. Any other point on the Yeah. laws of static friction? That Shubham also has posted it. Shubham also has written in charts. But I wanted to speak it out, Shubham. Second point, can you tell me? So they are independent of surface area and contact. Okay, can you explain that? That a force of static friction is independent of surface area in contact. Sir, the thing is, I saw the recording because I was absent for the last class. I was having fever. So सर मुझे वो Oh. समझा नहीं ये पार्ट कि आपने वो कहा था ना मतलब लेक्चर में कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो देन इंटरलॉक भी ज्यादा होंगे ना सर्फेस एरिया ज्यादा होगा तो number of फिर interlock, हाँ number of, वो so भी area of contact will be less. वो कैसे सर Because when you speak about number, because see, interlockings are what, are the interatomic forces. Are you getting it? तो अगर जहाँ पे तुम्हारा सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग्स अगर इंक्रीज होता है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, whereas if the surface area is less, number of interlockings might be less, but the area of contact will be more. So that is why we say it's independent. Students, if you want to give about independent, why is it independent? Then you need to speak about the product of number of cold wells into area of contact of each cold well remains constant. Ria, is it clear? yes A simple example you try to put forward. If I happen to keep a brick horizontal, and then if I keep a brick vertical, okay, keep a brick horizontal and keep a brick vertical and try to pull it, does the force applied remain the same or a little bit different? same Same. That means it's independent of the surface area. The static friction was dependent only on the normal reaction force, है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा भले एरिया तो तुमने हॉरिजॉन्टल रखा है, एक ब्रिक को हॉरिजॉन्टल रखा और एक ब्रिक को वर्टिकल रखा है, दोनों केस में तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेम इन दैट केस. सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, तो तुम्हें इसका रीजनिंग ऐसे देना है कि भले अगर ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आते हैं तो number of contact wells, if in case if I say it more in that case, but the area of contact will be less. Whereas wahan pe, if less area is coming in contact, so number of contact wells is less, but area of contact is more of each. And that product all the time remains constant. That is what you mean to say. Okay. yes And what about the any other point? The limiting force of static friction depends upon what? Material in contact and the nature of the surfaces in contact. It depends on to what? Material and the nature of surfaces in contact. Students, does it depends on to mu? Yes, mu is a coefficient of static friction. So mu किसके ऊपर dependent होता है? Nature and the material of surfaces in contact. Agreed, Ria? Ria, are you there? yes sir Okay. Ayan, are you there in lectures? It seems that you're not there in lectures, Ayan. If you are not answering, I'll put you in the waiting room for some time again. If you still don't reply, then I'll remove you from the lectures. Okay, Ayan? And Shubham Acharya, what about you? Can you see me, Shubham?
Yes, sir. Okay, fine. Okay, Tarang is over here. TV Vada Tarang, you were in which batch initially, Tarang? Tarang, you were in which batch? He's not replying at all now. Okay, students. So now when you speak about with respect to your the statements for laws of static friction, the first point, students, the force of static friction, students, is directly proportional to the normal reaction force. Okay, that is the limiting force of static friction. Students, limiting force of static friction is directly proportional to the normal reaction force. Okay, and second point, the limiting force of static friction is independent of surface area in contact. And the third point, it depends on the nature and the material of surfaces in contact stretch. And the formula for force of static friction is mu(s) into n is equal to m into g, where mu stands for coefficient of static friction. Okay, can anybody give me the statements for laws of kinetic friction? Anyone? Is anybody over here? Laws of kinetic friction. I removed, see, as students, when they don't reply, they don't respond, I remove from the lectures, students. So be careful. I might call up certain names in between. And if I don't find out that they are responding, they are not answering, or they are not saying yes, or whatever it is, they have to unmute themselves. They can't just text. Once or twice, if I ask, if you are not replying, you are going to be out of the lectures. That means that shows that you are not inside the lectures. You have switched it on. You have put your cell phones on, but you're not listening, you're not hearing, you're not concentrating in the lectures. So be careful about this also, students. And it's already out. Yes, students. What about anyone? Laws of kinetic friction, students. Anybody? So can I? Who's this? Ria? Yeah. Ria, you were absent the last lecture, Ria. Yes. Okay. And where do you sit? You sit on the second bench or third bench? Second day. Okay, you were in Blue House, or what exactly initially it was? Is it? Yeah, I was in Blue House. Sorry. Okay, got it. Students, don't you feel that she's the only one who's answering inside the lectures? Students, don't you feel angry onto her कि हमेशा आंसर क्यों देती है? सुजनी, No, sir. अच्छा, you are happy? Oh God, For what? I'm happy that she's giving answers, sir. अरे but she will score more than you then in physics. देख लेना फिर, और फिर happy लेना, फिर happy रहना, फिर तुम्हारा नाम सुजनी से happy सिंह कर देंगे हम लोग, ओके? फिर तो happy रहते क्या थे। कुछ भी नाम बोल रहे हो आप? अरे फिर क्या, हैप्पी थोड़ी होता है कोई कोई दूसरा तुमसे ज्यादा स्कोर करे तो, ऐसा थोड़ी चलता है। ओके रिया, आंसर हैप्पी सिंह। यस The रिया, force of kinetic friction is directly proportional to the normal reaction force between the two surfaces in contact. सेकंड पॉइंट, So वो same होगा ना? The
force of kinetic friction is independent of surface area. Absolutely correct. Same होगा, same होगा. और third point भी same होगा. Okay. Students, she gave all the 3 points. The third point is The also. third, Hmm. sir, and the third point, hold on. Okay. Now see, ये जो kinetic friction कभी होता है students when the body is at rest and when the body is in motion. Students? When the body is in motion. Of course. And how is the motion of the body? How is the motion of one body with respect to another? Should it be too fast? That means the relative velocity should be too large or too small? Or none of these? Students? अगर मुझे ध्यान से सुनना, what am I asking you? If I'm speaking about laws of kinetic friction, I getting it? Then there should be a relative motion of one body with respect to another. So how does the objects move on to the other? Does the motion of the object is too large or too small? Or none of these? Yes, anybody? Sir, it's not too large or nor too small. क्या बात है सुजिनी, क्या बात है. Why? What's the reason behind it, Sujini? क्या Sir, होगा? because the magnitude of the force of the kinetic friction is independent relatively velocity between the object and the surface provided by the relative velocity. So that's why it would be neither too large or nor too small. पूरा टेक्स्ट बुक में से एकदम बिंदास देखते हुए बोलो, ओपन बुक टेस्ट चल रहा है तेरा, है नहीं ना? sir. हंस मत, सब दिखाई दे रहा है, वीडियो ऑफ रखा है फिर भी सब दिखाई दे रहा है. बिंदास बुक खोल के बैठी है और बिंदास. ओके फाइन. सर स्टूडेंट्स, नोटबुक खोल के बैठे हो, टेक्स्ट बुक बंद है मेरा. ओके वेरी गुड. तो तुम्हें ये बोलना है सुजनी कि अगर सपोज स्टूडेंट्स, force of static friction is independent of the velocities of the two bodies provided the velocity, it depends, provided it's not too large. Students, अगर velocity बहुत large होगा ना students, तो friction है ही नहीं, friction is almost zero students वहां पे, तो kinetic friction बोलोगे ही नहीं. Students, have you heard about maglev? हाँ स्टूडेंट्स, मैगलिफ्ट या होवरक्राफ्ट पढ़ा है तुम लोगों ने? रिया, Sujini, do you know what exactly maglev is? Anybody? No sir. Trains which are made to run with a very high speed, magnetic lift. Students, there are magnetic trains. चाइना के अंदर है मैग्नेटिक ट्रेन्स, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लिफ्ट. मैग्नेटिक जापान में भी है. यानी स्टूडेंट्स, ट्रैक्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट आता है, उससे तुम्हारी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ाता है, और ऊपर से गाड़ी को ऑलमोस्ट व्हील्स ऑफ द कार आर trying to run with a very high speed and they are slightly away from the ground. We can assume it in that manner. वैसे ही hovercrafts are small boat type ships, rubber ones, पूरा रबर से भरा हुआ रहता है, और उसको सी के ऊपर अगर तुम सेल करते हो तो दैट कैन रन विद अ वेरी हाई स्पीड, much more speed equivalent to that of a train, a bullet train also. तो अगर तुम्हारा स्पीड बहुत ही ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं. या अगर बहुत ही स्लो हुआ तो वो तो स्टैटिक बोला जाएगा फिर. तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक फ्रिक्शन कभी प्ले रोल करता है जब भी एक बॉडी दूसरे के ऊपर मूव होती है, तभी होगा. लेकिन लेकिन स्पीड ना ही टू लार्ज होना चाहिए, ना ही टू स्मॉल होना चाहिए. Is that clear to everybody? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Harsh Darji, are you there? Harsh, are you there, Harsh? Harsh, are you there? अरे, हर्ष का नाम लिया भाग गया. ये क्या है यार? This is something silly.
Okay. Now, can anybody read the points for students rolling friction? Students, I want you to read advantages, disadvantages, and methods of reducing friction from the textbook. Anybody you can read from the textbook, page number 111, students. Everyone, Certainly. anyone. Yeah, Bolo. Read. Advantages of friction. Friction is necessary in our daily life. We can walk due to the friction between ground and feet. We can hold objects in hand due to static friction. Brake, brakes of vehicles work due to friction, hence we can reduce speeds or stop vehicles. Climbing on trees is possible due to the frictions. Okay, Disadvantage so of friction. wait, Friction wait, offers wait. Advantages of friction में पता चला कि friction supports motion also and friction holds the object also. हमेशा जरूरी नहीं कि friction disadvantage में ही होता है. Friction advantages में भी होता है students. अगर अगर ब्रेक लगती है तो कार के अंदर ब्रेक लगती है या टायर गाड़ी रुकती है तो वो friction between the rim and the tires. Getting it, which causes the car to come to rest. So it's like that. Read disadvantages. disadvantages of friction. Friction opposes motion. Friction produces heat in different parts of machines. It also produces noise. Automobile engines consumes more fuel due to frictions. Yes. So those cars and vehicle students, okay, which do not what do you call those cars which are not been tuned up, jinka what do you call, you don't try to oil it or grease it properly, तो उसमें noise आना शुरू हो जाता है. Are you getting it? And if you try to look into anywhere students, अगर suppose तुम road पे देखते हो तो एक नई कार होगी, तो स्टूडेंट्स नई कार को अगर तो कोई कोई बाजू में से ड्राइव भी करके जाएगा तो पता नहीं चलता है करके कि उसने शुरू करके चला गया. लेकिन वो इफ यू ट्राई टू हियर अ टैक्सी और अ पर्टिकुलर कार व्हिच इज 6 years 7 years 8 years down the line, or you will come to know about it when it starts. So of course friction can produce noise. Read further. Method. Methods of reducing friction. Use of lubricants, oils, and grease in different parts of a machine. Use of ball bearings converts kinetic friction into rolling friction. Yes, ball bearings का मतलब मैंने बोला ना राउंड ऑब्जेक्ट्स. I get रॉड के अराउंड तुमने राउंड ऑब्जेक्ट्स रख दिया फिर तुमने सर्कुलर प्लेट रख दिया तो द रॉड कैन रोटेट. Those are called as ball bearings. I don't know students whether you, because nowadays for last 2.5 years hardly any Navratri has been seen by students. I getting it. तो लेकिन शायद अगर तुम कहाँ पे नवरात्रि के फंक्शंस वगैरह होते हैं और किसी ने कोई डांडिया पकड़ा होता है तो ही मूव्स द डांडिया इनटू वन फिंगर. ओके. तो वो क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे एक सिस्टम रखते हैं जो रॉड रखते हैं और वो बॉल बेरिंग होता है और वो जो डांडिया होता है ना उसको फिक्स कर देते हैं. ठीक है, ऐसे डांडिया को फिक्स तो रॉड इट कैन रोटेट. फिर तुम ऐसे एक उंगली से घुमाओगे तो इट कैन गो. यू माइट बी थिंकिंग कि हाउ फास्ट इज डूइंग इट. लेकिन दे ट्राई टू वेयर रिंग्स स्टूडेंट्स. उनके फिंगर्स में रिंग्स होते हैं मेटल के और वो बॉल बेरिंग्स वाले होते हैं. दूर वाले को ऐसे लगेगा कि वो एक उंगली से घुमा रहा है बट नो इट्स नॉट लाइक दैट. ही इज वेयरिंग दोस बॉल बेरिंग्स इनटू हिज फिंगर्स and that's how it goes on rotating students. Okay, so do take care. So rolling friction is the least out of all of them. Okay. Okay. Now students, everybody solve multiple choice questions students on page number 112. Agreed? Everybody has a textbook students? Everyone has a textbook? Please raise your hands. Raise your hands, those who have the textbooks in front of you. Raise your hands higher. Just 12 students are having textbooks. What about rest of them? Aryan has entered right now. Hai na, Aryan? It was without Jai. What about you, Aryan?
Aryan, why don't you have the textbook in front of you? Mahek. Where's the textbook? Vishal. Vishal, textbook. Mahek. Yes, sir. Textbook. Yes, sir. Okay, Shubham Gupta, where is your textbook? Shubham Gupta, where's the textbook? Yes, sir, I have. Okay, very good. Then raise your hand. Raise your hand. Mahek, are you there, Mahek? Mahek, can you reply, Mahek? Mahek, if you don't reply, I'm going to throw you out of the lectures. Mahek, if you don't reply, I'll throw you out of the lectures. And Harsh Darji, where is the textbook? You go out of the lectures most of the time. Why like that? Harsh Darji, तुम्हारा textbook कहाँ पे है? Okay, students. Page number 112, students solve 1 to 5 MCQs fast. One who finishes with, please speak out the answers, okay? Keep your hands down now. Keep your hands down, students. All of you, keep your hands down fast. जिसने ये पांचों MCQs किया, students raise your hand fast. Put your hands down, students. Richa, put your hand down. Rahul Chaudhary, lower your hand. And can you tell me, students, which of the chapter has been started in your physics? और कौन सा chapter शुरू हुआ है, students? सर Yes, लास्ट Riya. क्लास में सचिन सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे. ओके, तो दूसरा कोई टॉपिक शुरू नहीं किया उसके बाद में सर ने? ओके, तो तुम्हारा भी कौन सा टॉपिक तुम्हें लेना है स्टूडेंट्स इसके बाद में? मैग्नेटिज्म. ओके, आज अगर तुम्हारे कुछ हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं. अगर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं स्टूडेंट्स, देन विल स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म. अदरवाइज व्हेन सर इज गोइंग टू डू विद इट, यू कैन टेल हिम टू गो अहेड विद मैग्नेटिज्म, डजंट मैटर. ओके, we'll be solving for certain few problems also today. Okay, so be ready with it, students. Okay, first give me the answers for the first 5 MCQs fast. Yes, anybody done?
You can unmute yourself, friends. Don't give me chats. Chat मत भेजो, unmute करो अपने आप को, students. Okay, can you give me the answer for the first one, students? Change in dimensions is known as Deformation. Deformation. okay. Change in dimensions is known as deformation. If I say change in dimension upon original dimension, then students, if I say change in dimension upon original dimension, तो तुम क्या बोलोगे? Strain. Absolutely correct. Who's this intelligent guy? कौन है ये? विशाल. Very good. Riya, Sujini. See, guys are also smart in this class. Don't think like that. The guys are not. Guys are very smart. They don't say it. They only give good answers. Whenever somebody doesn't know, they'll answer. Okay. Second one. The point on a stress strain curve at which the strain begins to increase even without increase in stress is called Yield point. Yield point. yield point, or will it be elastic point? The Breaking point on the no, how come? The point on the stress strain curve at which strain begins to increase. Strain बढ़ता रहेगा, students. Even without increase in stress, there is no increase in stress, but the strain increases. तो मैंने क्या बोला था? Yield point. The wire has yielded a new characteristic, students. The wire has yielded a new characteristics. Can you tell me which characteristics the wire has yielded? Can you tell me? It yields a new characteristic, students, called plasticity. Which, students? Hello, can you hear me? Yes, sir. Plasticity. Are you getting it? Okay. Then what are the third ones? So students, answer the second one is B. Students, कहाँ पे तुम अगर guide लेके बैठे होंगे? Students, if you go through the books also, students, listen carefully. I do feel so. In the market, there are books like Chetna publication. Students, I have written those books. Okay. 12th की भी टेक्स्ट बुक्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स, जैसे तुम्हारी नवनीत की गाइड होती है, नवनीत होती है, रिलायबल होती है, स्टूडेंट्स मार्केट में तुम देखोगे तुम्हारे कॉलेजेस के आसपास बुक स्टॉल में, तो वहां पे चेतना पब्लिकेशन की भी बुक देखना स्टूडेंट्स 11th and 12th में. Okay, so maybe my name is all, I have written those books, my name is also into it as one of the authors to put down. तो स्टूडेंट्स कहाँ पे तुम्हें दूसरी बुक्स में तुम्हें गलत आंसर दिए होंगे वहां पे, अगर शायद कोई रेफर करता होगा गाइड वगैरह दूसरी गाइड्स में तो वहां पे गलत, लेकिन ये यील्ड न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे यील्ड पॉइंट आना चाहिए. ओके. थर्ड वन, एनीबॉडी कैन गिव द आंसर फॉर द थर्ड वन? स्ट्रेन 3 meter cube. 3 meter cube. हाँ, Fahad is in waiting name. Sujni, why you are trying to favor Fahad? When did he enter in? Sir, I Sujni, don't texted me that he's in. no, when you don't know, Sujni, when you don't know when exactly Fahad has entered, then how could you favor such kind of people? How could you favor? You know, Sir. Fahad has entered just last 5 minutes before. And then I'm deliberately keeping in the waiting room. वो अपने फुर्सत से आया है. उसने टेक्स्ट कर दिया तुम्हें, तो you are trying to text me. Now you have to go out from the lectures. Let Fahad be in. I don't appreciate such kind of stupidity from students. Fahad, why you are late? Don't say that you are there in the waiting room. I kept you in the waiting room, yes, for 5 minutes. जानबूझ के रखा तेरे को.
Why you're late in the lectures? Tell me. Parth, unmute yourself. Actually, I came on that. Huh? Parth, I want to speak to your dad. मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है, Parth. I want to speak to your dad. I want to speak to your dad. पापा से बात करनी है. इतने लेट क्यों तुम गए लेक्चर्स में? उनको पता है क्या कि तुम लेट आते हो लेक्चर्स में? सर आज ही लेट हुआ एक्चुअली, मैं मेरे मॉम के साथ बाहर आया था इसलिए। कहाँ पे? तो मैं मॉम के साथ बाहर आया था इसलिए। लेकिन लेक्चर्स में माय डियर, तुम्हें तो पता है ना कि लेक्चर्स है। मैं 5-10 मिनट तक मैं जानबूझ के रुकता हूँ। स्टूडेंट्स अगर कोई लेट आएगा तो चलेगा, 5-10 मिनट चलता है। लेकिन तुम अरे मैंने तुम्हें सिर्फ 5 मिनट जानबूझ के मैंने तुम्हें रखा वेटिंग रूम में कि तुम लेट आ रहे थे। और साथ में मैंने महक को भी बाहर रखा। क्यों? क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। आई डोंट नो महक इज अ बॉय और गर्ल, आई डोंट नो अबाउट दैट। मे बी शायद मे बी अ बॉय। उसको भी मैंने बाहर रखा, महक को भी। रिस्पॉन्स रिप्लाई नहीं कर रहा था तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया, मैंने वेटिंग रूम में रख दिया। तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो बाहर ही रखोगे, और तुम लेट आए इसलिए बाहर थे। वो हर्ष दर्जी भी अपने आप में आ रहा है, अपने आप में जा रहा है। उसको क्वेश्चन पूछ रहा हो तो बाहर भागे जा रहा है। स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ ना ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर, आई एम प्लीज डोंट वर्क आउट में। आई विल सी टू इट कि आई विल टेल अविनाश सर टू टेल योर पेरेंट्स टू सिट इनटू द लेक्चर्स along with you all, and I'll see that it happens with all cameras on. नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लेक्चर्स में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में रखूंगा, कैमरा ऑन करा के। फिर देखता हूँ कौन निकलता है और कौन अपनी फुर्सत से आता है। And Sujin, you're trying to favor him without knowing the head and tail of it. I'm sorry, sir. Not sorry. It's not sorry. I'm not saying about it. He's going to fight himself for that. उसने reason दिया है ना. And when he was out with mom also knows about that. और पेरेंट्स जानबूझ के तो बच्चों को बाहर नहीं रखे, लेक्चर से दूर नहीं रखें। कुछ रीजन हुआ रहेगा फाद का, लेकिन फाद तुम्हें बता देना चाहिए था कि आई माइट बी लेट, आई एम समवेयर आउट। ऐसे ग्रुप में भी अगर मैसेज कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा जो ग्रुप है उसी के अंदर तुम मैसेज कर दो, सर आई एम आउट विद, आई माइट बी एंटरिंग लेट इनटू द लेक्चर्स, माय पेरेंट्स आर विद मी। या पेरेंट्स को बोल देने का लेक्चर्स में थोड़ा सा लेट आएगा, नो प्रॉब्लम। पेरेंट्स स्टूडेंट्स बॉटम लाइन ये है पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अगर पेरेंट्स को पता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। यू आर वेरी वेल टू कम इन व्हेनेवर यू फील लाइक दैट। लेकिन एक दफे उनको पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है लेक्चर्स में। Okay, now move further, students. Mahek, are you there? Can you give me the answer for the third one, Mahek? Again, I'm asking you, Mahek. If you're not answering yes or no, unmute yourself. Otherwise, again, you'll be out. Mahek, can you answer? Third one. Yes, anybody can give me the answer for the third one? There's no answer from Mahek. Yes, anybody third one? Now, students, I'll solve the third one. Please, third one come in a formula दे दिया था. Ria, you should have solved it. You were absent, I know that. You went through the video lectures, you should have got it. You have solved it. Yeah. Very good. And see the rest of the students, Sujini and all, you all say that you all were there in the lectures, but you are not able to. And somebody answered also. Somebody answered. Who answered? Was it Samir or somewhere? Yash, who was the one? जिसने आंसर किया था? Sir,
Vishal, you answered. Or Samir, you answered. So Samir is answered. Vishal, you also answered. नो सर, पर मुझे पता है 3 मीटर क्यूब. Fine, fine, absolutely correct. Can you tell me the formula? Anyone who can tell me the formula? What to go about with it? Strain energy of a stretch wire is given to you, and strain energy per unit volume of a same wire and same cross section is given to you. Its volume is. Students, अभी देखो तुम्हें formula नहीं मालूम तो तुम्हें आंसर मिल सकता है ना students. अभी देखो तुम्हारा आंसर सुना students. Strain energy, are you getting it? Is du. That is equal to dw. Agreed? That is strain energy we consider, and that is given to us how much? 18 into 10 raised to minus 3. दिया है strain energy per unit volume, that is work done per unit volume, जिसको हम नाम देते हैं energy density, and that is given to us how much? 6 into 10 raised to minus 3 joule meter cube inverse. Students, इसका formula क्या है? Can anybody give me the formula for strain energy? Yeah, work done in stretching the wire. Yes, anybody? Can you give me the formula for this? Fast. Half stretching force into elongation force. Elongation. Can you give me the formula for this? See, you all are forgetting. Half stress into strain. Half stress into strain. Students, this shows कि भले तुम्हारा ऑनलाइन लेक्चर्स हो या ऑफलाइन लेक्चर्स हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू नो, तुम्हें पढ़ाई करनी ही नहीं है. ये मैंने डेरिवेशन नहीं कराया था, इसका भी डेरिवेशन मैंने नहीं कराया था. हाँ स्टूडेंट्स, इसके नाम मैंने नहीं दिए थे, इसका भी नाम मैंने नहीं बताया था. जो चीजें पढ़ती होती है उसको तुम हाथ नहीं लगाते हो, और फिर बोलते हो, ऑनलाइन को ब्लेम करते हो कि ऑनलाइन की वजह से हमें समझ में नहीं आता है. Where the teachers go very slowly with you. Nobody goes in that much speed. Now the question asks is volume. तो ये जूल में है, ये जूल पर मीटर क्यूब है, तो तुम्हें करना क्या है? इसको इससे डिवाइड कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर. अगर सपोज मैंने इसको इसे डिवाइड कर दिया तो यूनिट भी डिवाइड हो जाएगा. तो देखो dw भी कैंसिल, तो कहने से हम गेटिंग dv, ये ऊपर चला जाएगा. 6 हाउ मेनी सा? 3 सा, ये कैंसिल हो गया. जूल और जूल कैंसिल हो गया, मीटर के ऊपर चला आएगा. दैट्स आंसर, खत्म हो गया. यानी अगर फॉर्मूला नहीं भी मालूम, स्टूडेंट सिर्फ यूनिट को देखते हुए इनका पता अबाउट इट, द आंसर इज व्हाट? बी. Fourth one, what is the answer? Dash is the property of a material which enables us to resist plastic deformation. Yes, anybody? Sir, hardness. Yes. And the fifth one, ability of a material to resist fracturing when force is applied to it. Toughness. 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 Okay, students. Now, students, I wanted to solve a few questions. Students, listen carefully. Okay. Please, I'll put the question, students. Students, solve first one, page number 113. Students, solve the first question. Okay. Solve the second question, students.
Solve the fifth question, students. Solve the seventh question, students. Solve the ninth question, students. Solve the 12th and 13th. So did you get it, students? First, second, fifth, seventh, ninth, 12th, 13th. Right now. और जिसको मैं unmute करने के लिए बोलूँगा, please you should answer. Okay. Shubham Acharya, can you hear me? Shubham? Yes, sir. The video on? Your video is on, sir. Okay, fine. Which problems I've told to solve? Can you tell me? Sir, you have written na? First, second, fifth, then seventh, ninth, and last two. 12th and 13th. Very good. Yes, sir. अभी मेरे को अभी solve करके बता, please. Yes, I'll try. And those who get it, please raise your hand. Okay. Yes, Harsh, Darshi, solve the first one. Harsh, Darshi, can you solve the first question? Page number 113. Mahek, can you solve the first one? Mahek? Mahek, it seems you are not in lectures. Who is Mahek? Can anybody know who's Mahek? Anybody knows Mahek, students? Yes, sir. Who's Mahek? So Sir. we know That she sits with a she sits next to you. not next to me. She sits front of me. Then why she's not answering it? I don't know. No, this is the way, because I feel like that there are some students who are entering inside, but they're not alert and attentive. I have to throw them out. I've already passed on message to her, please reply, but she's not replying at all. Yes, anybody can give me the answer to the first one, students? I'll just put on the question, students. First question क्या बताता है? Students, calculate the coefficient of static friction. First question क्या पूछा है? Calculate the coefficient of static friction. यानी μs पूछा, students. For an object of mass of 50 kilograms, mass of the object is given to us 50 kilogram. Okay, 50 kilogram on a horizontal table pulled by attaching a spring balance. The force is increased gradually. It is observed that the object just move when the spring balance shows 50 Newton. Are you getting it? So the object moves. Okay. So what is the applied force? 50 newtons. Okay. You have to find out the forces increase gradually. It is observed that the object just moves. The object just moves. Are you getting it? When spring balance shows 50 Newton. When the spring balance shows 50 Newton, students.
Yes, anybody? So 0.102. How do you get it? How do you get it, Bolo? सर स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लेके स्टैटिक हाँ सर और फिर n को mg लिखेंगे and then 50/50 into 9.8. Wait a minute. Force of static friction is mu(s) into n. Agreed? Yes. So force of static friction is equal to mu(s) into n, and m is m into g. Agreed? Yes. So what exactly your Fs will be? Fs is 50. Fs is 50. So can I say your force of static friction is 50? Yes. How do you come to that conclusion it's 50? This is force of static. How do you come to that conclusion it's 50? कैसे पता चला? The body just sends a move. Are you getting it? So when the applied force, students, if you look at the graphical representation, when the applied force reaches to a particular, the force of static friction also reaches to maximum, and that is called as limiting static friction. The body just tends to move. Students, अभी तुम्हें graphical मैंने बताया था, तो एक ग्राफ में मैंने incline करके फिर नीचे करके ऐसे दिया था. यहाँ पे मैंने क्या बताया था? Force of static friction बताया था मैंने, limiting. यानी अगर applied force बढ़ता है, तो force of static friction भी बढ़ता है. अगर तुम ध्यान से रीड करोगे तो तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड कर रहा था 50 न्यूटन. उस टाइम पे बॉडी जस्ट सेट्स इन मोशन, यानी वो क्या है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया. म्यूएस तुम्हें पूछा है, हाउ मच इज द मास ऑफ द बॉडी? 50. हाउ मच इज जी स्टूडेंट्स? 9.8. 9.8. So can you solve it now? 1/9.8 students. Agreed. So what exactly the value of म्यूएस? It's 50 upon 50 into 9.8. Solving it. What is म्यूएस? 1/9.8. Can you solve by log, students? क्या आंसर आएगा? 0.102. वेरी गुड. क्या बात है, कितना साइंटिफिक कैलकुलेटर है तू, तुझे नहीं है ना? आंसर दिया हुआ था. ओके. No, my dear. Shubham is asking, can you take GS10? No, my dear, you can't take GS10. Students, when you're solving board questions, you can't take acceleration to gravity as 10. अगर तुम्हें 10 बोला है प्रॉब्लम में तो ही 10 यूज करना, नहीं तो हमेशा 9.8 यूज करना स्टूडेंट्स. ओके. There's no reply from Mahek also. So I'm removing Mahek also. Gauri Nayak. Gauri Nayak. Gauri Nayak. Are you there, Gauri Nayak? Gauri Nayak, are you there? Gauri Nayak, it seems that you are not in lectures. If you don't reply, I'm going to throw you out of the lecture. If you don't unmute yourself, I'm going to throw you out of the lecture, Gauri. See, these are the students who just enter inside. Why so late, Gauri? Why are you late? I was there. No, you were not there at all. Yes, sir. I You were not- rejoined.
Okay, what did I do? मुझे बताओ क्या किया मैंने? ये प्रॉब्लम के पहले मैंने क्या किया था? बताओ। MCQ लिया था। MCQs किया था मैंने? यस सर। Okay, fine. टेक्स्ट बुक पे 112 पे। Okay, तो थर्ड MCQ का आंसर क्या है? कोई बता, गौरी बता सकते हो? 3 क्यूब। 3 मीटर क्यूब। यस तो बाहर क्यों चले गए थे फिर? सर, वो आपका आवाज थोड़ा ये आ रहा था, नेटवर्क इशू था, तो मैंने रीजॉइन किया। Okay, fine. Yes, next one, students. Can you answer for the next one? Second question, students. A block of mass 37 kg rests on a rough horizontal plane having coefficient of static friction of 0.3. Find out the least force required to just move the block horizontally. So students, what exactly you need to find out? Force of static friction. What's the formula, students, for this? mu s into mg. Yes, absolutely correct. Students, second one के लिए दिया है force of static friction, students, is equal to what? They have given to us mu s into n. Students, the formula what you're going to use will be equal to what? Mu s into 1, because a block of mass to 37 kg rests on a rough surface having coefficient of friction. So तुम्हें force of static friction पूछा, mu s into n, students, and mu n क्या है? m into g. यानी students तुम्हें क्या पूछा है? क्या force लगाओगे so that it just sets into motion? ये students limiting force of static friction है. Students अभी भी ध्यान में समझना कि ये क्या है, ये ग्राफ के हिसाब से जाता है. स्टूडेंट्स ये तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं अगर तुमने ग्राफ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन मैंने ग्राफ बताया था. जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा. जब भी फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आता है, बॉडी जस्ट सेट्स टू मूव. That means it breaks the cold wells, all cold wells at one instant. That means you are trying to overcome the static friction. तो ये पूछा है, how much is mu s given to you? Mu s is 0.3. ये कितना है? 37. G कितना है? 9.8. Can you solve and get the answer, students? क्या आंसर आएगा? 108.8. 108.8 Newton. 108.8 8.8 Newton. correct. Give me the answer for the fifth one now. Anybody can give me the answer for the fifth one? Fast. Shubham is answering. Shubham, unmute करके आंसर देना. टेक्स्ट क्या कर रहा है इतना? अनम्यूट करके आंसर दे. And students, you all are the witness, okay? Why Mahek has been out? Because I've said it so many times. She was not replying, or he was not replying. I don't know who's Mahek. Okay. And that Harsh was also going in and out, in and out. I told whenever I used to ask him question, he used to run away. बाहर चला जाता. So I don't like such kind of people. नहीं आता तो बिंदास बोलो ना, सर मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं आता है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ या सॉल्व कर रही हूँ, सर मुझे वापस एक्सप्लेन करो. आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. लेकिन टोटली zipped and mum don't speaking out a single word, that doesn't help you out. फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स? अ वायर गेट्स stretched by 4 millimeter. मुझे बताओ 4 millimeter क्या है? कैन आई से इट्स द elongation, students? You're solving the fifth question now. Okay, students. So elongation या extension कितना दिया है? 5 millimeter. Students, can you convert into meter? 5 millimeter को can you convert into meter? हाँ students? बोलो. So what exactly elongation is? It's 5 into 10 raised to minus 3 meters, students. That is in meter. 5 millimeter. Sorry. Which one are you doing?
Fifth one. Oh, very sorry. Fifth one नहीं है students. ये fourth वाला मैं बता रहा था. Students, calculate the work done in stretching a wire of length 2 meter and cross-sectional area 0.0225 millimeter square. Students, calculate the work done. यानी तुम्हें work done पूछा है students. Okay, calculate the work done in stretching a wire of length. What is the length of the wire? 2 meter. Okay, and cross-sectional area कितना दिया है students? Area of cross-section यानी area of cross-section का मतलब pi r square दिया है. Agreed? 0.0225 millimeter square. Students, इसको अगर तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे students? Can you write down this as 2.25 into 10 raised to क्या होगा? Can I say 10 raised to minus 2? आया ना? Millimeter square. Students, is this clear? Yes. Now, can I convert millimeter to meter? Yes, 1 millimeter is equal to how much? 10 raised to minus 3 meter. 1 millimeter square कितना होगा? 10 raised to minus 6 meter square. So now can I say area will be equal to how much? 2.25 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 6 meter square. यानी area कितना होगा? 2.25 into 10 raised to minus 8 meter square. क्या ये clear हुआ students? Area. Is this clear? मैंने देखो unit change कर दिया millimeter to meter square में. समझ में आ रहा है students? अरे हाँ या ना? Yes. Square कर. Now, when a load of how much? Load का मतलब क्या हुआ? Force of how much? Load, that is 100 newtons is applied to it. Okay. So calculate the work done in stretching a wire of length when area of cross section 100 slowly applied to its free end. Young's modulus of the wire is given to you. How much is the Young's modulus is given to you? It's 2 into 10 to the power of 11 Newton meter square inverse. So let's find out the work done. So what is the formula for work done? So bata sakte students, what's the formula for work done? So work done is equal to half stretching force into elongation. आया ना? Yes. लेकिन क्या तुम्हें elongation दिया students? Have they given you elongation? हाँ students? नहीं दिया. हाँ, तो E को substitute करोगे students. E को कैसे substitute करोगे? तो तुम बोलोगे सर हमें Young's modulus का formula मालूम है ना? Y is equal to F by A into L by E. ये formula पता है सबको? हाँ. तो can I say E क्या हो जाएगा? FL upon AY. Can I substitute this E back over here students? Yes. So what is the formula for work done? The formula for work done will be equal to half stretching force into, instead of E, can I say F L upon AY? So what's the formula for work done? Half F square L upon AY. Now, did you get all the values, students? Work done, half. How much is F square? Isko square karo. So can I say 10 raised to 2 the whole square? What is the original length of the wire? 2 meter. What is the area of cross section of the wire? 2.25 into 10 raised to minus 8. What is the Young's modulus of the wire? 2 into 10 raised to 11. What is the unit of this? This unit will be in joule. क्या ये clear हुआ सबको? Yes. Yes, sir. Or please solve and try to get the answer and match it up with your textbook. Sir, 2.222 joule. Are you getting it? कि calculator लेके सुची तुम calculator लेके बैठे हो? अच्छी बोलो. सर नहीं है कैलकुलेटर. तो तुमने आंसर ऐसे कैसे निकाल दिया? वीडियो ऑन करो, दिखाओ मुझे कैलकुलेशंस. सुचनी वीडियो ऑन करो, तुम्हारा बुक दिखाओ. I want to see your book. जल्दी से सुचनी, चलो देखते हैं अभी हम. सर. चलो चलो वीडियो ऑन करो, देखता हूँ मैं. Calculation on. Fast. Show me the calculations. Calculation दिखाओ. Okay.
Okay, very good. Very good. And children, Sujini is having full network. Pura yellow network hai. Strong network hai uska. Okay, students, good. Students, you need to go for the calculations properly, okay? Ria, are you getting it, Ria? Yes, sir, I'm solving. Okay, just solve and try to match up the answer. Shubham, are you getting it, Shubham? Vishal? Samir? Yes, sir, solve कर रहा हूँ. Okay. Yes. Fahad, Rahul? Those who've done with the fifth one, please go ahead with the next one, huh? Seventh and ninth, fast. Yes, is your answer matching, students? Shall I move further ahead? Yes. Okay. Yes, sir. Seventh one. Anyone who can answer for the seventh one, please. Units को तुम ध्यान से रखना, students. Conversion ध्यान में रखना. How to do the conversions? Yes, anybody can give an answer for the seventh one, students? A wire of mild steel has initial length is 1.5 and the diameter is 0.6, gets extended by 6.3 millimeters, students. When a certain force is applied to it, if Young's modulus is given to you, students, calculate the force applied. Yes, students, anybody? Yes, seventh one, students. Now, please pay attention for the data, students. Seventh question, okay? We are doing the seventh one, students, okay? A wire of mild steel has an initial length. Since initial length, yani capital L is given to us 1.5 meter, initial length is given to us 1.5 meter, and diameter 0.6 millimeters. If I say diameter is 0.6, zero likha hai, so no need to go for the zero, it's 0.6 millimeter. So can I say what is the radius? 0.3 millimeter into 10 raised to minus 3 meter. So can I say radius can be as 3 into 10 raised to minus 4 meter? Kya ye clear hua, students, radius? Yes. Students? Now, अगर radius दिया है, students, every wire is in form of a cylinder. तो ये तुम्हारा base area हो जाएगा. क्योंकि अगर तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है यंग्स मॉडुलस का या वर्क डन का, तो कहाँ पर एरिया को हम लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं. थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, पाई आर स्क्वायर. एग्रीड? भाई पाई को तुम्हें 3.142 लेना है या 22/7 लेना है, वो तुम्हारी मर्जी. आई गेटिंग इट? 22/7 लेना है या 3.1, लेकिन लॉग कैलकुलेशंस के हिसाब से देखना है, स्टूडेंट्स. सो पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 3 into 10 raised to minus 4 the whole square, और ये meters करो जाए. So students, did we get the original length? Yes. Did we get the area of cross section? Yes. फिर आगे क्या लिखा है? Gets extended. Students, the wire gets extended by 6.3 millimeter. कोई बता सकता है 6.3 millimeter? The wire gets extended by 6.3 millimeter. What is that? Is that the new length?
My students, 6.3 millimeter. No, my Yes. dear, it's not the new length. It is the change in length. Yeah, elongation. New length will be 1.5 plus. This is in meter. ये meter में convert करो. Plus, वो हो. ये new length नहीं है, ये elongation that's है. elongation. Please try to understand very carefully, students. तुम्हारा elongation या extension कितना दिया? 6.3 millimeter तो कहने से 6.3 into 10 raised to minus 3. ये तुम्हारा elongation हुआ. Okay, when a force is applied to it, okay, if Young's modulus of the wire is given to you, Young's modulus of the wire is given to how much? 2.1 into 10 raised to 11. Agreed? Calculate the force applied. तुम्हें F पूछा है. Now can you give me the formula, students? My students, what's the formula? Simple. Y is equal to F by A into L by E. वेरी गुड. तुम्हें F को सब्जेक्ट बनाना है तो Y A E by L. स्टूडेंट्स A था इसलिए मैंने पाई R स्क्वायर लिया. समझ में आ रहा है मैंने पाई R स्क्वायर क्यों लिया? सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. Y क्या है सर? 2.1 into 10 raised to 11 MK. और सारे यूनिट्स को देखना स्टूडेंट, सारे MKs में होने जरूरी है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर ये पाई है. पाई को कहने से 3.142 into R स्क्वायर. तो अगर इसको स्क्वायर कर दो तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 into 10 raised to minus 8 हो जाएगा. Agreed? Into elongation कितना दिया है? 6.3 into 10 raised to 10 raised to minus 3. The whole divided by original length. What is the original length is given to us? 1.5. Agreed. Now अगर मैं ये solve करूँ तो ये point चला जाएगा, ये point चला जाएगा. Suppose अगर मैं 3 से solve करूँगा तो 3 5 are 15, 3 7 are 21. Agreed. 9 7 are 63 into 3.142 into 6.3 divided by 5 into 10 raised to 11 minus 8 minus 3. Now can you solve and get the answer, students? Force चलो solve करो. ये आंसर तुम्हारा न्यूटन में हो. Solve, students, and get me the answer fast. Come on. And students, get me the answer for this. And students, one of you all, okay, please note down the names of the students who are into the lectures right now. Okay, there are 20 participants. Okay, a few students will go out. जैसे टाइम आगे बढ़ेगा उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में उनको लूंगा ही नहीं. Okay, so please, 1 or 2 students, please monitor very properly whose names are over here. Okay. और नेक्स्ट लेक्चर में फिर वो आते स्टूडेंट्स तो मैं उनको निकाल दूंगा फिर. बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स जिसको हैबिट होती है 20 मिनट 25 मिनट पहले निकल जाते हैं और फिर बोलते हैं नेट इशू है. Yes, please match your answers.
Yes, anyone? Sir, What are 250. Are you getting 250? Yes, sir. Perfect 250 मिल रहा है? Yes, sir. क्या बात है यार, कुछ नहीं, तू तो एकदम सही है मैथ्स में, पर मैथ्स बहुत अच्छा है। नहीं है। नहीं है? हाँ सर, बाई चांस ऐसा आंसर मिल जा रहा है मेरे को। Okay, fine. Okay, shall we go on to the next one? Ria, what about you, Ria? Are you getting it? Shubham? सर मुझे आ नहीं रहा। आई ट्राई हाँ? सर। क्या सर बोल मुझे रहे हो? मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। आई अगेन। 249.4 आ रहा है। हाँ, वही मैं बोलूंगा, 250 एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट्स, देखो मैं पाई को 22/7 ले लूं, 7 9 से 63, एग्रीड? तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 2 18, 9 2 18 and 119, 198 into 6.3 divided by 5. अभी स्टूडेंट्स ये देखो, 5 3 15, carry over 4, 5 9 45, point 5 6 30. So now Ria and Shubham just multiply 39.6 into 6.3. क्या आंसर आ रहा है? 249.48. Yes. यानी सुजनी उल्लू बना रही है, उल्लू बनावेंग, उल्लू बनावेंग। आंसर आपने पूछा इसलिए मैंने एग्जैक्ट आंसर दिया 2। हाँ, उल्लू बनावेंग, उल्लू बनावेंग, उल्लू बनावेंग। हंस मत सुजनी, तुम्हें देखते हुए गौरी ने भी इनकरेक्ट आंसर मुझे दे दिया। 250 उसने भी टाइप किया, बस वो टेक्स्ट बुक में लिखा है 250, इसलिए 250 बोल। लिखा है तो मेरा पॉइंट में, तो मेरे को लगा मेरा गलत हो गया, इसलिए मैं 250 बोला। They don't change your answer. Okay. And see, there were 21 students. Now it's 20. Who went off? Who went off? Okay, can I erase the students? Yes. Okay, the next one. Okay, solve for the ninth one. Anybody can go for the ninth one, students. Solve. Students, given to you a steel wire having a cross-sectional area is given to you. So ninth one students is given to you a steel wire having a cross-sectional area. So cross-sectional area is given to us 1.2 students millimeter square. Now students, can I write down 1 millimeter is equal to 10 raised to minus 3 meters, students? Therefore, area will be equal to 1.282. इसको square कर दूंगा तो कहने से this will be 10 raised to minus 6 meter square. Is this clear, students? Are students converting area from millimeter square to meter square? Students, is it clear? Yes. Okay. So a steel wire having a cross-sectional area is stretched by a force. Force कितना लग रहा है? How much is the force applied? 120 Newton. Students, force applied is 120 Newton. If a lateral strain, क्या दिया है? Lateral strain of 1.455 millimeter. Lateral strain का मतलब क्या है? Students, lateral strain is change in diameter upon original diameter. That is lateral strain.
This is called as lateral strain, students. Students, strain has no unit. It's a pure ratio. जब भी बाहर elongate होता है, and ध्यान से सुना, जब भी तुम elastic limit को overcome करते हो और जैसे बाहर elongate होगा, students, जैसे बाहर elongate होगा, और ये concept मैंने कभी बताया मालूम है, जब भी तुम्हारे lectures classroom में था उस time पे, वहां पे मैंने ये सिखाया, Poisson's ratio. There were three elastic constants: Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, and one was Poisson's ratio. Poisson's ratio is not a ratio of stress to strain. It's a ratio of two stress students. Sorry, two strains. So delta D by D is given to as lateral strain, students, and lateral strain is given to as how much? It's 1 point. If a lateral strain of, how come unit is given? Students, they've given lateral strain in unit. Okay, students, that means they've given in terms of what, change in diameter they've given you, students. Only change in diameter is produced in the wire. Calculate the Poisson's ratio, students. यानी सिर्फ तुम्हें ये डेल्टा डी दिया, students. Change in diameter ही दिया. Upon D नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने वहां पे यूनिट दिया, students. If you see over here, they've given the unit. Read it carefully. They've given. If you see over here, they've given that the lateral strain is 1.455 millimeters. So it's into 10⁻³ meters, students. Is produced in the wire. Calculate the Poisson's ratio. Students, sigma पूछा है. Young's modulus of steel दिया है. What is the Young's modulus of steel, students? So 2 into 10⁻11 Newton per meter square. Yes, students. Now can you get an answer? Anybody can tell me how to go about with this, students? बता सकता है कोई? Okay, shall I solve it for you all, students? बता दो कैसे करना है? हाँ, students. सर यंग मॉडुलस है। अभी देखो, सबसे पहले तुम्हें पूछा क्या है? सिग्मा. सिग्मा क्या है? ध्यान से देखना स्टूडेंट. सिग्मा क्या है? पॉइसन्स रेशियो. स्टूडेंट्स, पॉइसन्स रेशियो है क्या? It's not a ratio of stress to strain. It's a ratio of two strain. Students, it's a ratio of two strain. यानी इसका फॉर्मूला क्या है? Students, it is lateral strain. It's a ratio of lateral strain to longitudinal strain. And it has no unit. यानी इसका जो तुम फॉर्मूला लोगे ना स्टूडेंट्स, सिग्मा का, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? So sigma is change in diameter upon original diameter upon change in length upon original length. अभी तुम ध्यान से फॉर्मूला को देखो, तुम्हें सिग्मा है तो डेल्टा डी अपॉन डी होगा, है ना, इनटू एल अपॉन डेल्टा एल. अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें सिग्मा चाहिए तो ये चार फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, चार चीज चाहिए. चार में से कितनी दी हुई है? क्या डेल्टा डी दी हुई है? हाँ सर, डेल्टा डी दी हुई है. समझ में आ रहा है? Agreed. Now, if in case if I happen to consider if I happen to consider students, they've given to you cross section area. They've given to you. Can you find out D? Yes. तुम D निकाल सकते हो? Yes. Area क्या है? Students, what is area of cross section? Pi r square. तो students, यहाँ से तुम radius निकाल सकते हो students. R square क्या होगा? A upon pi. So R क्या होगा? Root of A upon pi. तुम्हें क्या चाहिए? Diameter twice radius. हाँ students, can you find out radius? Area कितना दिया? How much is area given to you? 1.2 into 10⁻⁻6 upon pi. I can substitute over here and can I get the diameter? Why not? तुम्हें diameter मिलता है. Agreed? Is strain given to you? No. Can you use formula for Young's modulus? Y is equal to F by A into L upon delta L, students. समझ में आ रहा है? यहां से can you get delta L by L? तो F upon AY.
Agreed? Yes. Agreed? Is F given to you? If F given to you, yes sir, 120. 120. Is area given to me? Yes. Is Young's modulus given to me? Am I getting delta L by L? Yes. Can I put delta L by L back in this equation? Yes. ये यहाँ पे आ जाएगा और ये D यहाँ पे आ जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is it clear? हाँ सर. लेकिन कैलकुलेटिव है स्टूडेंट, वापस कैलकुलेशन ज्यादा है. ये ध्यान में रखना, तुम्हारा यहाँ पे कैलकुलेशंस बढ़ने वाला है. समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हें कैलकुलेशंस को थोड़ा सा मिनिमाइज करना है तो तुम क्या करो मालूम है? इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करो ना. ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, सिग्मा डेल्टा टी को वैसे रखो स्टूडेंट्स. एग्रीड? गेटिंग इट? व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी कंसीडर इज पाई आर स्क्वायर. आई गेटिंग इट? So r square is equal to what? A by pi. So r is equal to root A by pi. What is diameter? Twice radius. So can I say twice root of A into root of pi? यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स d की जगह पे. Agreed? हाँ स्टूडेंट्स, ये जो d Yes. है Yes. तो देखो ना, उसको मैंने कैसे लिखा? ट्वाइस रेडियस. से ट्वाइस रेडियस, रेडियस का मैंने फॉर्मूला डाल दिया. इनटू व्हाट इज L अपॉन डेल्टा एल? स्टूडेंट्स, डेल्टा L by L इज दिस. व्हाट इज L अपॉन डेल्टा एल? L अपॉन डेल्टा एल क्या होगा? L अपॉन डेल्टा एल तो क्या होगा? 1.2 A by upon F. A by upon Yes. F. Now can you get an answer स्टूडेंट्स? Yes. और तुम्हारा अगर कैलकुलेशंस को और इजी बनाना है, और इजी बनाना, तो तुम क्या करो मालूम है? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. सी दिस इज हाउ स्टूडेंट्स वर स्लाइटली वाइज इन मैथ्स विल डू इट. वो क्या करेंगे? सिग्मा को वैसे ही रखेंगे, फिर वो बोलेंगे सर ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो क्या मैं सबको रूट में ले सकता हूँ? क्यों नहीं? तो ये क्या बन जाएगा सर? ये तो स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये क्या हो जाएगा? 4. इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. सर पाई तो वैसे का वैसे रहेगा, एरिया वैसे का वैसे रहेगा. ये एरिया रूट के अंदर आएगा तो एरिया स्क्वायर हो जाएगा. ये यंग्स मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा. ये एफ का स्क्वायर हो जाएगा. अब देखो तुम्हारा कैलकुलेशन इजी होगा कि नहीं होगा? एक एरिया कैंसिल हो गया. इज डेल्टा टी नाउ गिवन टू यू? हाउ मच इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज गिवन टू हाउ मच? 1.455 into 10 raised to पाई minus को तुम 3. क्या लोगे? पाई को तुम क्या लोगे? 3.142. एग्रीड? Yes. एरिया को क्या लिखोगे? 1.2 into 10 to minus 6. यंग्स मॉडुलस को स्क्वायर करोगे तो ये 4 into 10 to 22 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा. Yes. एग्री? और फोर्स क्या होगा? 120 into 120 डिनोमिनेटर में. और ये पूरा लॉग कैलकुलेशन होगा. Friends, ये पूरा log calculation होगा. That becomes the value of sigma. Will it have any unit? No. It's dimensionless. Ratio of two strains. ये clear हुआ students? Yes, sir. Please put down this, and I wanted to solve this particular part of it, students. ये बराबर लिखना students, और किसी भी हाल में solve करके रखना students. इसको ऐसे ही मत छोड़ना. I'm warning you all. Sit and try to work out with logarithms properly and solve it, students. Okay?
देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको एरेस कर दूं, ये पार्ट को एरेस कर दूं स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, So 1 minute. and Ria, why you were absent in the last lecture? So I was having fever. Oh, so was it Omicron? Right, sir. Viral. Hmm. Students, how many of you have taken vaccinations? Can you raise your hand? किसने लिया vaccination? Oh, Vishal has taken, Vivek has taken, Jay has taken, Tarang has taken, Suchi has taken, Nan, Dhairya, fine. Good. Please, rest of you also take the vaccination as soon as possible. तरंग हाथ उठा रहा है, वैक्सीनेशन के लिए हाथ उठा रहा है, लेकिन तरंग को क्वेश्चन पूछूंगा तो हाथ नहीं उठाता है। स्टूडेंट्स, क्या मैं इरेज करूं, ये पार्ट को इरेज करूं? हाँ सर। ओके, अभी स्टूडेंट्स लेट मी गो फॉर द कैलकुलेशंस। अगर सपोज मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से करना है तो मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा स्टूडेंट्स? एमसीक्यूज के हिसाब से। अगर यही क्वेश्चन मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया है तो मैं वी कैन गो बाय एस्टिमेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग एस्टिमेशन से जा सकते हैं। लेट अस गो फॉर द एस्टिमेशन स्टूडेंट्स। नाउ सी, ये पूरा रूट में है, तो आई विल पुट इट विद इन द रूट साइन। ओके, नाउ इफ आई से डेल्टा टी, स्टूडेंट्स ये जो डेल्टा टी जो स्क्वायर होगा तो इसको मैं 15 ले रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स 15 स्क्वायर इज 225। ओके, 15 स्क्वायर इज 225 स्टूडेंट्स। ये इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा पीछे। ओके, पाई को मैं लूंगा 3। एरिया क्या है 1.2, ये -6 और पीछे आ जाएगा। y क्या है 4, एग्रीड, इंटू 22, सो +22 ऊपर आ जाएगा, रूट के अंदर ही है, अपॉन ये कहाँ पे है 4, एग्रीड, f² इज 12² इज 144, एग्रीड, और ये 10⁻²। यानी अगर तुम ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये देखो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा -2, सो 6 and 6 12, एग्रीड, 12 and 2 is how much 14, एग्रीड। 22 - 14 कितना होता है स्टूडेंट्स? 8 होगा, एग्रीड, आया ना? हाँ सर। तो 10⁸ का अगर मैं रूट निकाल दूं, 10⁸ का अगर मैं रूट निकाल दूं तो कहने से 10⁴ हो जाएगा, एग्रीड। यस। ऊपर से अगर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये देखो इसको मैं अगर मैं 10⁸ लेता हूँ, ये पूरा कैंसिल हो गया तो 10⁸ आया। ध्यान से सुनना, अभी सपोज अगर मैं यहाँ पे एक डेसिमल में यहाँ पे निकाल दो स्टूडेंट्स, ओके, एक डेसिमल में यहाँ पे निकाल दो, एग्रीड, और यहाँ पे मैं एक डेसिमल निकाल दो तो क्या आंसर होगा? तो तुम क्या करोगे? इंटू 10, तो ये कितना होगा 22.5 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 144 इंटू 10⁶। आया ना? यस सर। ये रूट के अंदर आया। 10⁶ का रूट क्या होगा 10⁻3, ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, 12² इज 144, 3 4s are 12, 4 5s are 20, agreed? Yes. Are you getting it? 4 5s are 20, I am getting it in this case. So 5 point, I'm getting it something. Can I get my answer accordingly? Shows what is root 4? 2. Root 5, 2.2. Students, your answer will be closer to point में, decimal में आएगा students, अगर तुम perfectly solve करोगे।
you will get the answer. लेकिन ये answer without any units होगा. Agreed? लेकिन तुम्हें जाना है log calculations से. How you have to go for log calculations? Okay, go for the next question now. What is the answer for the 12th one? Anybody? Yes, anyone? See, there are 3 students who left. Three students who left. उसमें से just now I said about somebody. सबके पेरेंट्स को बोलना चाहिए, तुरंत एक फोन कॉल जाना चाहिए. Yes, students. 12th one. Students, the question is, what is the stress in a wire which is 50 meters long, 0.01 centimeters square in cross section, if the wire bears a load of 100 kilogram? What is the stress? Students, stress पूछा है. तो stress का मतलब क्या? F by A, restoring force per unit area या force applied per unit area. So what is the stress in the wire which is 50 meters long? Length कितना दिया? 50 meters, students. And 0.01 centimeter square in cross section, यानी area of cross section कितना दिया? 10 raised to minus 2 centimeter square दिया, students. Can I get it into meter square? Yes, 1 centimeter is equal to how much? 10 raised to minus 2. So area will be equal to how much? 10 raised to minus 2 into square करो तो 10 raised to minus 4 meter square. So area कितना होगा? 10 raised to minus 6 meter square, students. तुम्हें area मिला है, length दिया है. If the wire bears a load, so what exactly the load which is force applied कितना दिया है? Students, force is, mass is given to us 100 kilogram. Force will be 100 kilogram force, which is equal to 100 into 9.8 Newton में. Can I say 100 into 100 into 98? It is 980 Newton. So students, what is the load applied? 980 Newton. क्या ये data clear हुआ, students? Now, what exactly stresses force per unit area? How much is the force? What is the area of cross section? What's the answer? Agreed. So what's the answer? 98 into 10 raised to 7. Can I write on 9.8 into 10 raised to 8 Newton meter square inverse? That's the answer. Check out the answer. Is the answer 9.8 into 10 raised to 8? Yes. यानी स्टूडेंट्स मैंने क्या क्या मालूम है, लोड तुम्हें 100 किलोग्राम्स दिया टेक्स्ट बुक में, लेकिन फोर्स क्या बन जाएगा मालूम है? 100 किलोग्राम फोर्स. एंड स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने लॉस ऑफ मोशन किया है. स्टूडेंट्स, व्हाट इज 1 किलोग्राम फोर्स? 1 kilogram force is equal to 9.8 Newton. तो multiply by 9.8 will get your answer. Agree, students? Okay, the last question, 13th one. Can I erase this? इसको erase कर दो, students. Can I erase this? हाँ sir. Okay. Give me the answer for the 13th one. Come on, fast. Anybody? Somebody?
तो जब ये लेक्चर शुरू हुआ तभी 25 to 26 स्टूडेंट्स थे, यानी अगर मैं 26 पकड़ू तो एक्सक्लूडिंग मी देयर वर 25 एंड नाउ देयर आर 16 स्टूडेंट्स, मी 17th। यानी समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? 9 स्टूडेंट्स आई हैव गॉन आउट। उसमें से 2 स्टूडेंट्स को तो मैंने ही निकाला, महक को एंड दैट अदर वन जो अंदर बार क्वेश्चन पूछा तो बाहर भागता था, उसमें 2 स्टूडेंट्स। So there are 7 students who have went out and I want to now know the name of the 7 students. There will be a call going to them. Tell your friends who have gone out. उनको बता देना। Yes, 13th. What is the strain in the wire cable of an original length? Students, original length कितना दिया है? Original length is given as 50 50 meters. meter. Okay. Whose length increases by? Students, length increases by यानी क्या दिया उन्होंने? Is it change in length or new length? Elongation, change in length. Elongation. Yes. Delta L या elongation दिया students. यानी 2.5 centimeters. So it's 2.5 into 10 raised to minus 2 meter. When the load is lifted, okay. So what is the strain in the wire cable of a original length when length increases when the load is lifted? Yes. So तुम्हें क्या पूछा? Strain पूछा. What's the formula for strain, students? Delta L by L, E by L. Yes or no? Yes. बस 5 simple. into 10 raised to minus 4. क्या बात है, एकदम intelligent. Okay, so it's 2.5 into 10 raised to minus 2 divided by 50. Solve this, you'll get the answer. Does strain has any unit, students? Does strain has any unit? No, sir. No. Oh, are you getting it? It has no unit. Are you getting it? Is that clear? Yes. The students, today we have completed this. एक वाला जो problem हम लोग ने किया ना students, जहाँ पे calculations करना बाकी है root के अंदर, please try to work out that calculation properly. Okay? Is that clear? Now, next lecture, your sir will start with whatever topic. Okay, if he starts with magnetism, we'll look. You can ask your college. College ने कौन सा chapter शुरू किया students after magnetism? कोई chapter पता है तुम्हें? हाँ students. Hello, students, are you there? हाँ sir. कॉलेज ने कौन सा शुरू किया? कॉलेज ने कौन सा शुरू किया? लेक्चर्स चालू है ना ऑनलाइन? हाँ स्टूडेंट्स, कॉलेज के Yes. तो कौन सा चैप्टर चल रहा है वहां पे कॉलेज में? फिजिक्स में? Oh my सर God, आप nobody लेते knows. हो, आप लेते हो वही ना? यही चालू है? हाँ मतलब सर इंटीग्रेटेड है ना, तो फिर कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चर नहीं होते। नहीं, अरे लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स को तुमने पूछा होगा ना कि उनका पोर्शन कहाँ तक गया है, मैं वो बारे में बात कर रहा हूँ। क्या है पता सर? नहीं ऐसे क्या पता करना चाहिए ना तुम लोगों को स्टूडेंट्स। ओके फाइन, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर स्टूडेंट्स। ओके Yes. बाय, टेक केयर। ओके Bye.